Let's start with question number 1. It says express each number as a product of its prime factor. तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे जो भी नंबर हमें प्रोवाइडेड है उसका प्राइम फैक्टर निकालना है. जैसे कि आपको पता है कि 140 का क्या होगा, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 फर्स्ट ऑफ ऑल. So dividing 140 with 2, you will get 70 as a next number. Then you will divide it with 2 again, so it will give you 35. Then 35 you know is divisible with 5, then with 7, and ending with 7 only. So now how you can write 140 as a prime factor? It will be 2 square into 5 into 7. That's it. 2 square क्यों लिखा? Because 2 is repeating twice. So now moving to the next one, which is 156. अब 156 का भी हमें prime factorization निकालना है. It will be again divided with 2, and if you will divide it with 2, you will get 7 here, and you will get 78. Then again dividing it with 2, you will get 39, and yes, dividing 39 with 13, so you will get 3 here, or you can write 3 first, then you can write 13. So 3, then it will be by 13. So now let me write 156 as a prime factor. It will be 2 square into 3 into 13. Now moving to the next one, you have is 3825. So 3825 will be divisible with 3 first of all. So you will get 1 here, then you will get 2 here, then you will get 22, it will be by 7 then, and then it will be 15, so ending with 5. Again it will be divisible with 3. Let me divide it with 3 again. So you will get 4 first of all, then you will get 75. Now 75 divided by 3 is 25. So when you divide 1275 with 3, it will give you 425. Then you have 425. Now you can divide it with 5. So 425 divided by 5 will give you 85. Then again with 5 you will get 1 here, and then 35 it is 7, then again 17, then ending with 1. So you will have 3825 as 3 square, 5 square, and 70. Now the next one is 5005. So you can clearly see that 5005 will be divisible with 5 first of all, then it will be 1001, then dividing it with 7. 1001 is divisible with 7, so it will give you 143. Seven is divisible with 143. Then 143 will be divisible with 11. It will give you 13 as the next number, and then in the last it will be 13 only. So 5005 can be written as 5 into 7 into 11 into 13. Now the next number, which is 7429. So now 7429 will be divisible with 17. This is the number which is divisible with 17. I am doing the fifth one. 7429 is divisible with 17 first of all. So if you divide these two numbers, this number with 17, you will get 437. Then 437 is divisible with 19, and then you will get 23. 19 into 23 is 437, and in the last it is a prime number, so it will be 23 only. So 7429 can be written as 17 into 9 into 23. So yes, this is your answer for the first one. Now moving to the second one. Let's start with question number 2. It says find the LCM and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. So हमें सबसे पहले क्या करना है, LCM और HCF निकालना है.
और उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला होता है हमारा LCM into HCF is equal to product of two numbers, given numbers, उनका प्रोडक्ट लोगे it will be equal to LCM into HCF। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स। 26 को आप कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2 into 13। 91 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 into 13। आया कैसे, ये प्राइम फैक्टर से आएगा, क्योंकि देखो 26 is divisible with 2, 13, then again 13 divided by 1, so 2 into 13। Then you have 91, 91 is divisible with 7, so you will get 13, then 13, 1 in the end। So now what you have to do is you have to find LCM. LCM is what, least common multiple, HCF, HCF is highest common factor, so in this case highest common factor is 13, then LCM will be the leftover part, which is 2, 7 and 13. Just multiply these three, you will get 182. And what is the HCF? HCF is 13. Now we have to verify the left side and the right side. So let me write down the formula here. It is product of two numbers. So first of all, LCM, it is 182. HCF 13, product of two numbers का मतलब क्या होगा, that you have to take these two numbers 26 and 91, multiply 182 with 13, you will get 2366, and on the other side as well you will get 2366. So this is your answer for the first one. Now I will be doing the second part of it. It is 510 and 92. So what you have to do is you have to first figure out the prime factors of 510 and you have to figure out the factors of 92. So 510 is divisible with 2, 205. Then 205 will be divisible with 255 it will be, and it is divisible with 3. Let me just rewrite. It is 255, half of 510, 3 से divisible होगा, then if you divide it with 3 it will give you 8 and then 5, then you can divide it with 5, it will give you 17, 17 पे end हो जाएगा। So 510 can be written as 2 into 3 into 5 into 17, then 92, 92 का भी आप prime factor करोगे, it will give you, divided by 2, it will give you 2, and then divided by 2 it will give you 46, then 46 is again divisible by 2, it will give you 23, and 23 is a prime number. So 92 can be written as 2 square into 23. Now let us write the LCM and HCF of it. So HCF is very simple. HCF will be 2. As you can see, highest common factor is 2 in both of the cases. And LCM कितना होगा यार, जो भी leftover part है, you have to consider 2 square, you have to consider 23, you have to consider 3, you have to consider 5, you have to consider 17. Just multiply these all, you will get 23,460. Now you have to verify as well, और verify के केस में आपको क्या करना है, LCM into HCF is equal to product of two numbers. LCM कितना है यहाँ पे हमारा, it is 23,460, HCF कितना है 2, product of two numbers कितना होगा 510 into 92. So left side पे अगर आप multiply करोगे तो you will get 46,920, on the other side you will get 46,920. So yes, this is verified. Now your homework is to do the third part, and yes, comment down your answer in the comment section below. Now we'll be moving to the third question of exercise 1.2. Let's start with the third question. It says find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. Prime factorization method हमें apply करना है और LCM और HCF find करना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, 12 है, दूसरा नंबर 15 है, तीसरा नंबर 21 है। अब आप 12 को एज अ प्राइम नंबर कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5। 21 को कैसे मेंशन कर सकते हो, 3 इंटू 7। सो यू हैव 3 एज अ कॉमन टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF विल बी 3। LCM आपका कितना होगा, 2 स्क्वायर बचा है, 1 3 विल बी कंसिडर,
1.5 will be considered, 1.7 will be considered. Multiply these all, you will get 420. तो अब इसमें वेरिफिकेशन काम नहीं आएगी बिकॉज वी हैव 3 नंबर्स हियर. 3 नंबर्स के लिए कभी भी वेरीफाई नहीं कर सकते. सेकेंड पार्ट करते हैं. दिस इज डन. एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था बस हमें. नेक्स्ट है आपका 17, 23, 29. अब ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं हमारे? दे आर प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं? एक तो नंबर एंड 1. सो यस, HCF विल बी 1. कॉमन नंबर तो कुछ है नहीं, 1 ही है सिर्फ. LCM कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी 17 into 23 into 29. Multiply these all, you will get 11,339. So this is your answer for the second one. Now moving to the third part. Third part में आपके पास क्या दिया हुआ है? 8, 9 and 25. So we know 8 can be written as 2 का cube, 9 can be written as 3 square, and then into 1 into 1, and 25 can be written as 5 square. So HCF in this case will be 1 only. LCM कितना होगा? All the numbers we have. 2 raised to power 3, 3 raised to power 2, 5 raised to power 2. Just multiply these all, you will get the LCM as 1800. So yes, this is the answer for the third one. Now moving to fourth one. Now you have the fourth question. It says given that HCF of 306 and 657 is 9. LCM is, we have to find the LCM. HCF आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, 2 नंबर्स आपको दिए हुए हैं. आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो? HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. HCF की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9. LCM आपको नहीं पता. प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट लेना है, जो कि है आपके 306 और 657. बट अब आपने बस क्या करना है? 9 को राइट साइड लेकर जाना है बिकॉज दैट्स इन मल्टीप्लीकेशन विद LCM. 306 into 657 divided by 9, and you can reduce 306 with 9 because I can see it is divisible with 9. It will give you 34, and then you can multiply 34 with 657. It will give you 22,338. So yes, this is the answer for the fourth one. Now moving to fifth question. Let's start with question number 5. It says check whether 6n can end with digit 0 for any natural number n. मतलब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वो एंड होगा कभी 0 डिजिट से? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. अगर हमारा कोई नंबर डिजिट एंड से डिजिट मतलब एंड डिजिट 0 होना चाहिए तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 10. इफ आई कैन से एनी नंबर which needs to end with digit 0, it should be divisible by 10. It should be divisible by 10. बट यहाँ पे तो मेरे को पता है कि 6n तो डिविजिबल हो ही नहीं सकता, और अगर वो 10 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 into 5, क्योंकि 10 का फैक्टर क्या होता है? 2 and 5. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा नंबर क्या है? 6n. अब 6n को आप कैसे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज 2 into 3n, राइट? तो इसके अंदर यू कैन सी दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6. तो अगर 5 नहीं है यहाँ पे तो इससे हमें ये क्या समझ आता है? दैट 6n इज नॉट डिविजिबल बाय 5. तो अगर वो डिविजिबल नहीं है 5 से तो इसका मतलब क्या है कि 6n कभी भी एंड नहीं हो सकता 0 से. तो बस आपने इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर अगर उसके फैक्टर 2 और 5 हैं, दे कैन एंड विद 0, अदरवाइज दे वोंट. बस इतनी सी बात है. Now moving to the sixth question. Question number 6 is explain why this number and this number are composite number. तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंस क्या है. जो प्राइम नंबर्स होते हैं दे कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड देयर नंबर, बट जो कॉम्पोजिट नंबर है दे हैव फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. तो हम सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखेंगे कि ये कॉम्पोजिट क्यों है. बहुत सिंपल सा आंसर है कि क्यों कॉम्पोजिट है, अभी आपको समझ आ जाएगा. देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि दिस नंबर हैज 2 टर्म्स. एक टर्म हमारी ये पूरी है 7, 11, 13,
दूसरी टर्म हमारी 13 है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि विच टर्म यू कैन टेक कॉमन, यू कैन टेक 13 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में क्या बचा 7 इंटू 11, सेकेंड टर्म में क्या बचा 1। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा 13 है, 7 इंटू 11 कितना होता है 77 प्लस 1, सो यू हैव 13, यू हैव 78। बस 13 इंटू 78 को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई करो, नहीं तो इसको फैक्टराइज कर दो। जैसे कि आई कैन राइट 13 इंटू 13 इंटू 6। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन है इट हैज टू फैक्टर्स, 6 भी है, 13 भी है, 1 भी है, तो इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। सेम वी हैव टू डू विद द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर का भी देख लो कैसे करना है। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है दिस इज माई कंप्लीट फर्स्ट नंबर, दिस इज द सेकेंड टर्म, 5 कैन बी टेकन कॉमन और आपके पास क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। बस अब हमें फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है इन सारे नंबर्स को, दिस विल गिव यू 1008 एंड देन प्लस 1। तो आपके पास बचा क्या 5 इंटू 1009। 1009 और 5 हमें पता है कि एक अलग अलग फैक्टर्स हैं, so yes again it is a composite number. Now moving to the seventh one. Let's start with question number 7. It says there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time, go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ही जगह पे एंड कर रहे हैं, बट जो सोनिया है उसको कितने मिनट लग रहे हैं 18 मिनट्स लग रहे हैं उसी राउंड को कवर करने में, और रवि को ही इज टेकिंग ओनली 12 मिनट्स। तो अब आप ये सोचोगे कि ये कौन से पॉइंट पे आके दोबारा मिलेंगे, नेक्स्ट राउंड में जरूर मिलेंगे लेकिन कब मिलेंगे। तो बस हमें क्या करना है इसके लिए एप्लीकेशन यूज करनी होगी एलसीएम की, क्योंकि एलसीएम क्या होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उससे पता चल जाएगा कि हाँ कौन से पॉइंट पे आके ये दोनों मीट करेंगे। सो सबसे पहले यू विल टेक फैक्टराइजेशन ऑफ 18, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2, 9, 3, 3 and 1. So you can write it as 2 into 3 square. 12 can be written as divided by 2 again. So 6, 2, 3, 3 and 1. So you can write it as 2 square into 3. अब एलसीएम लिखना है हमें, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं वी टेक हाईएस्ट पावर लेंगे यहाँ पे जो भी है। तो आप देख सकते हो 2 में 2 स्क्वायर है एंड यू हैव इन 3 स्क्वायर, so 2 square is 4 into 9 is 36 minutes.